Assalamu alaikum everyone. Welcome to lecture number 8, segment number 1. Lecture number 7 में हमने इंटरनल ऑडिट, उसके फंक्शंस, इंटरनल ऑडिटर के फंक्शंस, तमाम चीज़ें डिस्कस की थी. Lecture number 8 में we'll discuss the standards associated with internal auditing. Now, as we all know that internal auditing is conducted in a very diverse legal and cultural environment, and you can have many variations in an environment. इसका मतलब ये है कि as an internal auditor you will come across many diverse and different environments, so you'll have to adjust yourself accordingly. And the organizations that you'll be doing the internal audit for, उनका purpose, उनका size, उनकी complexity, उनका structure, सब कुछ vary कर सकता है. So the differences are there which can affect the practice of internal auditing. लेकिन जो आपके international standards हैं, your internal auditing should stick to those standards, and those standards are the international standards for the professional practice of internal auditing. Now, these are the standards which are issued and implemented by IIA, as we discussed in the previous lecture. Now, what is the purpose of the standard? The purpose of the standard is to guide adherence with the mandatory elements of the International Professional Practices Framework. स्टैंडर्ड का मकसद ये है कि यू शुड adhere to the mandatory elements of the IPPF, as we have discussed. The purpose of standard is to provide a framework for performing and promoting a broad range of value-added internal auditing services. इसका थर्ड स्टैंडर्ड का पर्पस हो सकता है टू स्टैब्लिश द बेसिस फॉर द एवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट परफॉर्मेंस. इन स्टैंडर्ड्स के थ्रू आप जो आपकी इंटरनल ऑडिटिंग थी उसकी परफॉर्मेंस को आप एवेल्यूएट कर सकते हैं. ना हाउ यू कैन डू दैट? यू कैन एनालाइज द internal audit which has been performed, and you can compare it with the standards, and then this way you can judge how much did the internal audit follow the standards. इसका fourth reason हो सकता है to foster improved organizational processes and operations. Now, how this can be achieved? When you start following the standards while doing the internal audit. Now, internal audit is done by an employee of the company, as you all know. So what it will do, इससे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोसेसेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोसीजर्स हैं, वो इम्प्रूव होंगे, वो फॉस्टर होंगे, उनमें बेहतरी आएगी. सो दीज आर द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ हैविंग द स्टैंडर्ड्स. The standards are a set of principle-based mandatory requirements consisting of statements of core requirements. Core means main, internal. For the professional practice of internal auditing and evaluating the effectiveness of performance that are internationally applicable at organizational and individual levels. When we talk about the internal auditing standard, तो ये ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं. वो ऐसे कि जो इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर में कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, क्वालिफिकेशन, प्रोसीजरल नो हाउ, all this should be according to the internal auditing standards. Now, these standards, along with the code of ethics, it gives you all the mandatory elements of the International Professional Practice Framework. ये IPPF का जो फ्रेमवर्क है उसमें ये तमाम स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके साथ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, और ये तमाम जो है इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द IPPF फ्रेमवर्क. ये IPPF फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क है जिसको इंटरनल ऑडिटर भी फॉलो करता है और ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉलो करती हैं वाइल implementing the internal audit and hiring the internal auditor.
अब स्टैंडर्ड्स किन टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, attribute and performance standards. As you know, attribute means characteristic, खासियत. Attribute standards address the attributes of organizations and individuals performing internal auditing. ये organizations के भी attribute और characteristics को define करती हैं, but also the individuals performing internal auditing. अब कौन से individuals internal auditing perform करता है? आपका internal auditor. वो इंटरनल ऑडिटर जो है इज पार्ट ऑफ द ऑडिट कमेटी. सॉरी. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग and provide quality criteria against which performance of these services can be measured. Now what is performance? क्या है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग. ये डिफाइन करती है कि जो इंटरनल ऑडिटिंग है उसकी नेचर क्या है, वो कैसे होगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगी, एंड प्रोवाइड क्वालिटी क्राइटेरिया अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस ऑफ दीज सर्विसेज कैन बी मेजर्ड. ना सिर्फ वो डिफाइन करती है बल्कि उसके साथ साथ वो आपको क्वालिटी क्राइटेरिया भी देती है जिसके ज़रिए यू कैन जज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. Implementation standards expand upon the attribute and performance standards by providing the requirements applicable to assurance or consulting services. जो implementation standards हैं ये आपकी attribute और performance standards दोनों को further broaden करते हैं. How? By providing the requirements applicable to assurance and consulting services. Now what is assurance service? Assurance service involves the internal auditor's objective statement of evidence to provide opinions or conclusions regarding an entity, operation, function, process, system or other subject matters. So assurance services basically objective assessment होती है of evidence to provide opinions. इस assurance services में जो इंटरनल ऑडिटर हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं रिगार्डिंग वट एवर दे वर ऑडिटिंग, बी इट अ प्रोसेस, बी इट द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बी इट एनी डिपार्टमेंट, बी इट एनी एम्प्लॉई, बी इट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज कॉल्ड द एश्योरेंस सर्विसेज. जनरली देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन एश्योरेंस सर्विसेज. एक पार्टी तो वो होती है जिसकी इंटरनल ऑडिट हो रहा होता है, जिसका एश्योरेंस सर्विस जिसको प्रोवाइड की जा रही होती है. सेकंड पार्टी वो होती है जो एश्योरेंस सर्विस दे रही होती है विच इज़ योर इंटरनल ऑडिटर. और थर्ड पार्टी ये होती है यूज़र. फॉर एग्जांपल एक इंटरनल ऑडिटर है, उसने एश्योरेंस सर्विस की किसी ऑर्गेनाइजेशन की. अब उसका यूज़र कौन हो सकता है? उसका यूज़र हो सकता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटर, उसका यूज़र हो सकता है कंपनी के स्टेक होल्डर्स. नाउ व्हाट इज़ कंसल्टिंग सर्विसेज? कंसल्टिंग सर्विसेज आर एडवाइजरी इन नेचर. कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो दीज सर्विसेज आर रिलेटेड टू गिविंग एडवाइस and are generally performed at the specific request of an engagement client. Engagement client वो client है जो इंटरनल ऑडिटर को हायर करेगा कि वो कंसल्टेंसी सर्विस दे उस ऑर्गेनाइजेशन को. द नेचर एंड स्कोप ऑफ द कंसल्टिंग engagement are subject to agreement with the engagement client. तो आपका जो उस क्लाइंट से एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से आप उसको कंसल्टिंग सर्विस देंगे. Consulting services में there are normally 2 parties involved. One is the client and one is the internal auditor. The standards apply to individual internal auditors and the internal audit activity. अभी जितने आपके standards हैं ये तमाम standards internal auditor पे भी लागू हैं और जो इंटरनल ऑडिट की कंप्लीट एक्टिविटी है जिसमें उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उस पे भी ये स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं. All internal auditors are accountable for conforming with the standards related to individual objectivity, proficiency and due professional care and the standards relevant to the performance of their job responsibilities. Next segment में आपको मैं जाके इन तमाम terms के definitions दूंगा with complete explanation. Chief audit executives are additionally accountable for the internal audit activities
overall conformance with the standards. जो चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव है, ही इज़ द वन हु इज़ हेडिंग द ऑडिट कमेटी. ये उसकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ऑल द स्टैंडर्ड्स आर in accordance with the IPPF rules and regulations. Now this is the end of lecture number 8, segment number 1. Segment number 2 में we'll discuss different standards. Thank you.